Good morning to all of you. Myself Shamilaj, Assistant Professor of Chemistry from Government College for Women Badra. Today's my topic is magnetic properties of transition metal complexes. So, first of all, magnetism कहाँ से आता है? तो magnetism, the presence of unpaired electron in the molecules give rise to the magnetic properties which are very useful in determining the इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स. जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो हमारी अनपेड इलेक्ट्रॉन से डिफाइन कर सकते हैं. जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा उसमें मैग्नेटिज्म होगी. The magnetic properties of a substance are useful and provide useful information for understanding bonding and structure of transition metal complexes. Now, the magnetic properties of transition metal ions and their complexes. When a transition metal ions or their complexes are placed in external magnetic field, they behave as differently. जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं कि अगर किसी एक ट्रांजिशन मेटल आयन को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है. एंड ऑन दिस बिहेवियर these substances can be classified into the different categories. First is the paramagnetic, second is the diamagnetic, third ferromagnetic, fourth antiferromagnetic, and the last is the ferrimagnetic substances. Now first is the what is paramagnetic substances. These substances attracted weakly by the external magnetic field, and the phenomenon is known as paramagnetism. The paramagnetic behavior of a substance is due to presence of unpaired electrons in the atomic orbitals. जिसमें weakly attracted हो external magnetic field से तो उन substances को हम paramagnetic substances बोलते हैं. Now second is the diamagnetic substances. What are diamagnetic substances? The substances which are repelled by the external magnetic field are known as diamagnetic substances. जो कि रिपेल किए जाते हैं उन substances को हम diamagnetic substances बोलते हैं. And the diamagnetism is due to the presence of all the electrons are in पेयर्ड कंडीशन. जब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पेयर्ड कंडीशन में होंगे तो उस कंडीशन को हम डायमैग्नेटिज्म कहेंगे और सब्सटेंस को हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे. नाउ नेक्स्ट इज द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. These substances strongly attracted by the external magnetic field, and the phenomenon is known as a ferromagnetism. The ferromagnetic character arises due to the presence of large number of unpaired electrons in the atomic orbital. इसमें जितने ज़्यादा unpaired electrons होंगे फेरोमैग्नेटिज्म में उसके कारण जो है आपका फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा. बट इट इज़ इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पैरेलल डायरेक्शन में अरेंज्ड होंगे. एक्सप्लेनेशन अगर हम इसकी देखें the metal ions of ferromagnetic substances are grouped together into the small region known as domains. अगर हम इसमें देखें कि सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में पैरेलल डायरेक्शन में प्रेजेंट है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो हाईएस्ट होगा ferromagnetic substance में. When magnetic moment of all domains are aligned in the same direction, so overall magnetic moments create additive effect, and these substances get permanently magnetized even in the absence of external magnetic field. Now next is the एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे जैसे निकल है, कोबाल्ट है, क्रोमियम ऑक्साइड है. Now next is the antiferromagnetism. When magnetic moment of all the domains are aligned in such a way that they give zero net magnetic moment. It means कि जितने इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पैरेलल डायरेक्शन में है उसके उतने ही अपोजिट जो हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उस केस में हमारा जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. ज़ीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट होगा फॉर द एंटी फेरोमैग्नेटिज्म. एंड हियर आर द एग्जांपल MnO2, FeO, NiO, and V2O5. Next category is the ferrimagnetism.
when magnetic moment of domain are aligned in parallel and anti-parallel direction in such a way that it creates the net magnetic moment। जब क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनका नंबर जो है वो अनइक्वल होगा, तो दीज सब्सटेंसेस अट्रैक्टेड वीकली एज कम्पेयर टू द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड इन दिस केस there is a net magnetic moment present but it will be less value। एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि फेराइट्स के फॉर्मूले हैं, जैसे Fe2O M2 पॉजिटिव Fe2O4। नाउ स्पेशल नोट इसमें क्या दे रखा है हमारा कि all the ferromagnetic, anti-ferromagnetic and ferrimagnetic substances transformed into the paramagnetic form at high temperature, that is Curie temperature, due to the randomization of the spin of electron। So what is the Curie temperature? The temperature above which a substance lost its magnetic behavior is known as Curie temperature, and the Curie temperature for most of the substances is 850 degrees Celsius। Now next, how to deduce the formula for calculating the magnetic moment of transition matter, and this is the magnetic moment is of transition metal is the combination of orbital magnetic moment and spin magnetic moment। So we know orbital magnetic moment will be equal to root of L into L plus 1 Bohr's magneton, and mu s is equal to spin magnetic moment will be equal to 2 into root of S into S plus 1। So the total value of magnetic moment will be this formula, mu is equal to L into L plus 1 root plus 2 into root of S into S plus 1 Bohr's magneton। So there is also another formula if we take unpaired electron, so mu effective will be equal to root of n into n plus 2 Bohr's magneton, and n is the number of unpaired electrons। So if we have 0 unpaired electron, so magnetic moment will be 0, and if we take unpaired electron is equal to 1, so the mu effective will be root 3, that will be equal to 1.73 Bohr's magneton। And if we have unpaired electron n equals to 6, so mu effective will be equal to mu root of 48, and that will be equal to 6.93 Bohr's magneton। So we can calculate the spin magnetic moment of different formula, different compounds, ions। So Cr3 positive, in Cr3 positive, first Cr3 positive, the electronic configuration is argon D3, so number of unpaired electrons that will be equal to 3, so mu s will be the root of 15 Bohr's magneton, that is a 3.89। Next is for cobalt ion, that is electronic configuration is argon 3d6, so unpaired electron will be 4, and mu s will be the 4.89 Bohr's magneton। Here more is the example, that is the calculate magnetic moment of manganese 2 plus ion. Electronic configuration of Mn2 positive will be argon 3d5, number of unpaired electron is 5, so mu s will be the root of 35 Bohr's magneton, that will be equal to 5.89 Bohr's magneton। Now what are ferromagnetism and antiferromagnetism, and in this these are the form of paramagnetism which are independent on the temperature as well as the field strength, whereas simple paramagnetism obey Curie or Curie-Weiss law and not the field strength dependent। So these two types are ferromagnetism and the antiferromagnetism। If we plot this graph, magnetic susceptibility versus temperature, so we can see this type of graph in case of the paramagnetic substances, but in ferromagnetic substances there is discontinuity in graph at some temperature
Tc, that is known as the Curie temperature, and above this temperature the substance follows the Curie or Curie-Weiss law, that is it behave as a paramagnetic substances, and below the Curie temperature their behavior is different and depend upon the strength of magnetic field. So Curie temperature के ऊपर अगर जाता है तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो अपनी मैग्नेटिज्म पावर को छोड़ देता है और वो सिंपल पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगता है। इसके बाद अगर हम एंटी फेरोमैग्नेटिक की बात करें, देयर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर नॉन एज द नील टेम्परेचर, and above the Néel temperature the behavior of substances just like simple paramagnetic substances, but below the Néel's temperature the magnetic susceptibility decreases with decrease in temperature। लेकिन अगर हम एंटी फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो नील टेम्परेचर से अगर अबव हो जाता है तो एंटी मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है अपनी मैग्नेटिक पावर को छोड़कर, मतलब उसको छोड़ देता है और वो एक सिंपल पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। लेकिन बिलो द नील टेम्परेचर इट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विल decrease with decrease in temperature if we see the graph of magnetic susceptibility with the temperature. Thank you.